what is the fixed functional appliance given below? So you have to identify the image. Herbst, Rito, Jasper jumper, forces. I'll zoom in the image as well now. HS says 9th 3, that is Jasper jumper. SR also says option 3. So the correct answer is Herbst appliance, not Jasper. So this image you have to identify the fixed functional appliance. Herbst is a rigid fixed functional. Rito is also a rigid. Jasper jumper is flexible. Forces is hybrid. Now how to identify? देखने में सारे एक जैसे ही लगते हैं. सबसे बड़ा है आइडेंटिफिकेशन फीचर फ्रॉम रिजिड टू फ्लेक्सिबल. इसमें एक स्टील बेस लगा हुआ है, मीन्स डायरेक्टली अटैच टू द कैप. यू कैन सी अ ट्यूब मेटल ट्यूब प्रेजेंट. अगर मेटल ट्यूब है मीन्स इट्स अ रिजिड फिक्स फंक्शनल अप्लायंस. इट वोंट अलाउ यू टू मूव एनी काइंड ऑफ लैग. अगर एग्जामिनर वांट्स टू आस्क यू अबाउट अ फ्लेक्सिबल फिक्स्ड फंक्शनल अप्लायंस, it will definitely have a nylon covering, nylon tubing over it, nylon or vinyl tubing that will be colored green yellow color की लगा देंगे. अगर metal steel दिख रहा है, it's a rigid fixed functional appliance, simple as that. और अगर hybrid appliance है like forces, eureka spring and somewhat like that, it will have a like this rigid rod partial covering a nitai coil spring, somewhat kind of image. They will give you certain clear cut identification features for you to identify in the exam. And FYI, most of the time आज तक एग्जाम में हर्ब्स ही पूछा गया है 95% टाइम्स. 5% टाइम्स जैस्पर जंपर, बाकी दो तो कभी पूछे ही नहीं गए. आइडेंटिफाई करें. ऑप्शन में दिए हैं बट दे हैवंट आस्क्ड. एंड एज आई सेड, इफ यू आर एबल टू नैरो इट डाउन टू ऑप्शन 2 ऑप्शंस 1 and 3, गो फॉर हेड, डू अटेम्प्ट इट दैट क्वेश्चन. एंड इसमें तो डायरेक्टली स्टील रॉड इतनी बड़ी बड़ी दिख रही, हाईलाइटिंग पॉइंटिंग यू टुवर्ड्स दिस हर्ब्स अप्लायंस. ओके, ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो मैंने दिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन, ईयर क्वेश्चन विच आई हैव सीन. सो डोंट टेक इट एज वर्ड बाय वर्ड की सर ने तो कहा था ऐसे ही होता है तो आई वी मार्क्ड इट. ओके, नेक्स्ट